pollination here. So that means first I tell you about the before pollination. Okay, so that means before pollination, you know the pollination, that means transfer of pollen grain anther to stigma. Okay, तो before pollination ये कितने स्टेज का होता है? That is a 2 cell stage, very important. Okay, this is a 2 cell stage, 2 cells होते हैं. Okay, but next it is a here, that is a after pollination, that is a after pollination structure of the pollen grain or a male gametophyte, that means particularly उसके अंदर बनेगा, that is a 3 cell stage. So this is very important here. This is a tetrad structure. This is a tetrad structure of the microspore. I'll draw here first. But development of, particularly development of male gametophyte, that is a before pollination 2 cell stage, and after pollination that is a 3 cell stage. तो that means उसमें कुछ ना कुछ conversion होगा. Okay, अपन डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे सामने में. Okay, also one more, that is a more important particularly statement about दी गई है, that is a HSC में, more about 60% angiospermic plant, most of the 60% angiospermic plant pollen grains release in 2 cell stage. Okay, most of the, that means particularly most of the angiosperm, that is a most of the angiosperm और most of the angiosperm और particularly मैं बोल सकता हूँ that is a more than 60% of angiosperm release pollen grain in 2 cell stage. It is very important. तो that means particularly वो कितने stage में होता है? तो that is a 2 cell stage में. This is very important. Okay, more than 60% angiosperm release pollen grain in 2 cell stage. Okay, so that means it is a development of male gametophyte. तो that means before pollination होने के बाद उसमें 2 cell stage रहती है. Then after pollination होने के बाद that means pollen grain anther to stigma transfer होने के बाद वो 3 cell stage बन जाता है. तो that means particularly it is very important. Also pollen grains transfer, that means particularly transfer anther to stigma. It is very important terminology. अपन डिटेल में सामने में पढ़ेंगे. आप लोगों को ये समझ में आया होगा. Sporangious tissue present in the particularly pollen chamber deployed in nature after their mitosis. यहाँ पर very important है, mitosis हो रहा है means particularly mitosis होने के बाद वहाँ पर sporangious tissue भी कुछ बन रहा होगा. Then particularly mitosis होने के बाद also microspore mother cell are form but deployed in nature. जब meiosis होगा microspore tetrad form होगा, that is a 4. Okay, and particularly they are haploid in nature. Okay, तो फिर इनके अंदर that is a male gametophyte और particularly यही से development of male gametophyte होगा before pollination, that is a 2 cell stage. Okay, and that is after pollination, that is a 3 cell stage. And this statement, it is very important. More than 60% of angiosperm release pollen grains, that means by release pollen grains in 2 cell stage. This is very important. Now next, that is a pollen grain and development of male gametophyte, very important. Okay, that is a pollen grain, very important, pollen grain and particularly and development, that is the development of male, pollen grain and development of male gametophyte, very important, that is a male gametophyte. Here that means pollen grains, that is a structure. Okay, it is a male gametophyte बोल सकते हो तुम लोग. Okay, that means particularly here I'll particularly underline in, that is a pollen grain, very important, and that is a male gametophyte. Okay, here this terminologies, it is very important.
about the that is a male that is a development of male gametophyte. Here one more thing that is very important, pollen grain है तो that means I'll draw here one structure. This is particularly pollen grains. Okay, this is particularly that is a pollen grains, and here small space, this is a space, that is a small space. Okay, then particularly that means here deposition of, that means particularly here deposition of sporopollenin. ओके, दैट्स मीन्स स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होगा इसके ऊपर. हियर दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली स्पोरो, दैट इज अ स्पोरोपोलेनिन, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ स्पोरोपोलेनिन. दैट्स मीन्स डिपोजिशन होगा तो दे आर फॉर्म पर्टिकुलरली, देयर आर लाइन्स, देयर आर टू लाइन्स हियर. दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वन इज एक्साइन एंड अनदर इज इंटाइन. ओके, so that means particularly it is a exine, okay, and second it is a entine. Okay, that means deposition, that is a sporolinin का deposition हो रहा है तो that means exine बन रहा है, और this is a exine. Okay, deposition, that means particularly tapetum release the sporopollenin, that is very important. But this cell first is that is unicellular in nature. ओके, कैसा है तो दैट इज यूनिसेलुलर इन नेचर. तो दैट्स मीन्स एक्साइन इट इज मेड अप ऑफ sporopollenin, but entine it is made up of that is a cellulose, very important, that is a cellulose. Okay, and that is another pectin. Okay, so it is, there are two substance very important. Exine it is made up of that is a sporopollenin. Okay, exine it is made up of sporopollenin, but entine it is made up of cellulose and pectin. Okay, so this, but overall the pollen grain is made up of sporolinin as well as that is a cellulose and pectin. Okay, so this is very important. Sporopollenin it is a hardest substance. ओके, और हाई रेजिस्टेंस. ओके, हाई रेजिस्टेंस पावर उसके अंदर है. दैट्स मीन्स कोई वाटर को अंदर नहीं आने देगा, कोई केमिकल सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देगा. बहुत ही बढ़िया उसके पास क्या है, एक रेजिस्टेंस पावर है, यानी कि वो हार्म पहुंचाएगा, यानी कि हार्मफुल होने नहीं देगा किसको, पोलन ग्रेन को. तो दैट्स मीन्स इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस. sporopollenin it is a hardest substance and resistance power से that means particularly water को अंदर नहीं आने देगा and chemical को अंदर नहीं आने देगा. Exine it is the outermost layer, entine it is the innermost layer. Okay, but exine it is made up of that is a sporopollenin, it is very important, and entine it is made up of cellulose plus pectin. Total entire pollen grain is made up of sporolinin and cellulose plus pectin. It is all about very important. Here this portion, that means particularly this part, it is called as the germ pore. Okay, so here very important two terminologies about the monocots. Very important, one is monocots and second is it is a dicots. Okay, so that means monocots. Okay, monocots that means उनके अंदर किस टाइप का जर्म पोर्स होगा एंड डाइकॉट्स के अंदर किस तरह का जर्म पोर्स होगा. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हमेशा डाइकॉट जो होते हैं उनके अंदर जो दैट इज अ जर्म पोर होता है वो होता है दैट इज कॉल्ड एज द ट्राइपोरेट कहा जाता है उसको, दैट इज अ ट्राइपोरेट. वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अंदर 3 जर्म पोर्स होंगे. ओके, एंड मोनोकॉट्स के अंदर अपने को कितना मिलेगा, दैट इज ओनली 1 पोर, तो दैट इज कॉल्ड एज द यूनिपोरेट. वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यूनिपोरेट एंड दैट इज अ ट्राइपोरेट. It is very important. Okay, so this is all about the particularly monocot. This is a germ pores. एक स्पेस रहेगी जहां से पोलन ग्रेन यानी कि दैट्स मीन्स वहीं से वो पोलन ट्यूब क्या करेगा, फॉर्म करेगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. डाइकॉट्स में कैसा होता है तो दैट इज अ ट्राइपोरेट.
ओके और मोनो दैट्स मीन्स मोनोकॉट्स में कैसा होता है तो दैट इज अ यूनिपोरेट तो दैट्स मीन्स हियर 1 germ pores are present and here 3 germ pores are present. It is very important. Okay, then particularly this is structure. It is अपन ने सब कुछ देख लिया इसको किससे डेवलपमेंट होता है क्या होता है. वन मोर टर्मिनोलॉजी दैट्स मीन्स टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज द स्पोरोडर्म. इसको क्या कहा जाता है तो दैट इज अ स्पोरोडर्म. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. ओके देन इनके अंदर दिस स्ट्रक्चर इट इज अ यूनिसेलुलर इन नेचर. ओके वो कैसा है तो दैट इज अ यूनिसेलुलर इन नेचर. ओके देन हियर शोज फर्स्ट माइटोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे क्या होगा दैट इज अ फर्स्ट माइटोसिस एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद यहां पर अपने को मिलेगा वन इज small cell that means small cell and they have larger nucleus but larger cell have small nucleus. It is very important. So that means this is a larger cell have larger cell that is a larger cell have स्मॉल न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ये आपको आपके बुक्स में भी मिलेगा बट वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी दैट इज HSC पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन. दैट्स मीन्स ऑल्सो इसके बारे में तुम लोगों को पूछा जाता है दैट इज अ ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ दैट इज अ particularly pollen grain. Also that is a pollen grain and development of male gametophyte. So this is all about this is very important for your examination. Then this is also this is a larger cell, this is a smaller cell having larger having large nucleus. Very important. Okay, having here also very important. That means particularly इनके पास क्या है एक सेल है. ओके और वो सेल पर्टिकुलरली इनके अंदर क्या हुआ है तो दैट इज अ फर्स्ट माइटोसिस प्रोसेस हो गई है. ओके देन ऑल्सो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर साइटोप्लाज्म है वैक्यूल से but this cell wall it is not a definite cell wall. Okay, this cell wall it is not a definite cell wall. It is very important. Okay, so that means here I'll also draw one structure of the particularly pollen grains. Okay, like this. Okay, this is structure and particularly it is not a definite shape. So that means particularly this is nucleus and particularly यहाँ पर ये सेल थोड़ा स्पिंडल शेप हो जाता है क्योंकि ये सेल वॉल क्या नहीं है एक डेफिनेट सेल वॉल नहीं है. ओके तो दैट्स मीन्स दोनों को सेल वॉल में पकड़ लिया है अभी. तो दैट्स मीन्स सेल वॉल दोनों के लिए सेम ही होगा. सेम होगा मीन्स पर्टिकुलरली क्या कि यहाँ पर पहले तो यहाँ इट इज नॉट अ डेफिनेट सेल वॉल. अभी वहां पर कैसा दिख रहा है दैट इज अ स्पिंडल शेल दैट इज अ स्पिंडल shape. Okay, so that means one is generative cell and one is that is a vegetative cell. So this cell it is called as the generative cell. इसको क्या बोलोगे generative cell and this cell is called as the vegetative cell. Very important here. ओके तो दैट्स मीन्स अभी यही जाने के बाद यही से क्या होगा दैट इज अ डेवलपमेंट. ओके डेवलपमेंट होगा मीन्स पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट है. ओके तो अपन ने एक तरीके से एक पोलन ग्रेन्स दैट इज अ मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर डेवलपमेंट हियर. ओके और यही पे अभी यही से ट्रांसफर होगा और जो भी पार्ट्स है तो दैट इज अ बिफोर पॉलिनेशन इट इज अ 2 cell stage. You know the okay and there are present 2 cell. Okay so this is very important. I told you particularly firstly that is a before development of male gametophyte. That means before pollination depend upon before pollination and after pollination, but before pollination it is a 2 cell stage and particularly after pollination it is a 3 cell stage. So this is all about the particularly pollen grain and development of male gametophyte.